विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आ, दक्ष प्रजापति और सती देवी और शिव जी का जो एपिसोड जो आता है चौथे स्कंध में, उसका उससे हमें प्रैक्टिकल क्या क्या लेसन्स ले सकते हैं अपने लाइफ में भागवतम से। तो भागवतम में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के कई पुत्र हैं। सबसे पहले तो चतुष कुमार हुए हैं, उसके बाद शिव जी रुद्र पैदा हुए हैं और 10 प्रजापति पैदा हुए हैं। उनके अलावा भी कुछ और संतान भी हैं। उनके अलावा स्वयं मनु और शत्रुपा, ये सब ब्रह्मा जी के संतान हैं। हम्म। और ये जो ब्रह्मा जी के संतान हैं, उनमें से एक है 10 प्रजापति में से एक है दक्ष प्रजापति। एज द नेम सजेस्ट, दक्ष का मतलब एक्सपर्ट है ना। सो दक्ष इज एक्सपर्ट इन व्हाट? Prabhupada says Daksha is expert in creating progeny. Daksha is expert in uh, increasing the population, spice population, not just like cats and dogs, but so creating population doesn't mean only having sex. It actually means to take responsibility for the children. So not only to maintain them physically by giving them food and shelter, education, and other necessities of life,
but it also means to engage them in religious activities. That means dharma, dharmic activities. So basically, Daksha Prajapati is expert in doing that. Yes. So Daksha Prajapati, because he was very religious, he knew how to do yajnas. He knew how to do deity worship. I mean, he was actually a great devotee of Vishnu, of Lord Vishnu. He would he performed tapasya for Lord Vishnu also. Should I just speak in English? Okay. Rather dull. So, so yeah, so Daksha Prajapati, because he was a great devotee of Vishnu, he would perform, he performed tapasya for Lord Vishnu, and Lord Vishnu appeared before him. Please sit in such a way that I can see you. You take the task and come a little bit this side. Here. Yeah. Don't show your back to the deity. Yeah. So, Daksha Prajapati, he performed tapasya for Lord Vishnu, and Lord Vishnu appeared in front of him. And he offered very beautiful prayers, which are also in the Bhagavatam. They are called the Hamsa Guhya prayers, offered by Daksha. So, unfortunately, the problem with him is he was too proud, because he had a little bit, he had a big position, one of the most respected Prajapatis, son of Brahma. So therefore, when he whenever he used to enter any assembly, everyone used to stand up in respect. All the other Prajapatis also. So it is described in the Bhagavatam 4th canto that once Lord Brahma, there was a yajna, there was a sabha in which Lord Brahma was presiding, and everyone was invited. So it was actually the early part, or what do you say, time of the universe. The universe was not yet fully populated. Only the original forefathers were present, maybe some others, their children, and so on. It was like the early dawn of the universe, universal creation. So at that time, only the Prajapatis and some other prominent personalities were present. So they had a meeting in which Lord Brahma was presiding, and all the Prajapatis were invited. And Daksha Prajapati also came. As soon as Daksha came, everyone stood up to respect Daksha, except Lord Brahma and Lord Shiva, of course, except these two persons. Everyone stood up. And Daksha noticed that Lord Shiva did not stand up. So he went and took his seat, and then he started speaking. That this person, Shiva, he does not have any respect. He does not know how to behave. Because he was considering Daksha as his son-in-law, although he was son of Brahma. He was also son of Brahma. Both are sons of Brahma. Daksha was also son of Brahma. Lord Shiva also was son of Brahma. So therefore, Daksha considered Shiva, like a brother, not brother, but he was also son-in-law. In those times, it was different. So, so Daksha had several daughters, 16 daughters, one of whom was Sati, and he gave his daughter in marriage to Shiva. Why? He did not like Lord Shiva, but because of Brahma's advice, he did that.
So therefore, he was thinking that, Lord Brahma told me to give. And in fact, he was indirectly criticizing Brahma also. This person, he has no cleanliness. He does not take bath. He is always in the crematoriums, surrounded by ghosts and other, lowly creatures. Always, like a madman, laughing and crying and, all sorts of things. Very bad behavior. And he does not have a house or anything. So his lowly behavior is unbefitting a Prajapati. He's bringing bad name to all the Prajapatis. He is the only one who behaves like this. Everyone else is civilized. But he is the only one who does not know how to behave. I did not want to give my daughter in marriage to Shiva. But on the insistence of Brahma, he did not even say Brahma. He said what? Parameshthi. Parameshthi, the foremost Prajapati. That is Brahma. On his insistence, I gave my daughter. So in other words, he was indirectly criticizing Brahma's judgment also. Right? Yeah. So, so therefore, in this way, Lord Daksha Prajapati was speaking many bad things about Lord Shiva. And finally, he cursed him. He said that this fellow, because of his bad behavior, he is not fit to get the portion of yajnas. Whatever yajna is, whenever any yajna is performed, right? The offerings are made to various demigods, and everyone gets a part of that offering. So, Daksha Prajapati cursed that, from now onwards he will not get any part of the sacrifice. यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, ऐसा उन्हें श्राप दिया. Yes. So the point is now, sometimes people think कि लोगों को लगता है कि यज्ञ भाग is how the devatas get their nourishment, their food. Yes, that is true. But actually, they are not depending on it. They are not totally depending on it. Like Lord Shiva has been cursed that he will not get any yajna bhav. So is he weak? Because he's not getting food. No. They have their own, source of income. Right? हम घर का किराया नहीं भरेंगे तो मकान मालिक भूखा नहीं मरेगा. ऐसा नहीं कि हमारे किराए से ही वो जी रहा है. Right? He's getting this as a side income. Right? But for great demigods like Lord Brahma, Lord Shiva, and others, they are not depending on our yajna for their sustenance. The asuras, they think that by stopping yajnas, what do? We're cutting the food for the demigods and they stop. That is the asuric mentality, but that's not true. So anyway, in this way, Lord Daksha Prajapati cursed Lord Shiva that you will not get any yajna bhaga or the portion of the sacrifice. And when he cursed like this, then Daksha Prajapati, even everyone was trying to pacify him. Even Brahma tried to calm him, cool him down, but he wouldn't get cooled down. So after cursing Lord Shiva in this way, he left. And at that time, Nandishvara, the
what do you say, the carrier of Lord Shiva, he became very, very angry. Mm. At Daksha Prajapati, he said, you know, Lord Shiva is being blasphemed like this. And he said, this person, he thinks that Shiva is only his son-in-law, but he does not know the greatness of Lord Shiva. So, therefore, because he's such an idiot, he will lose his head. He already lost his head, you know, in the sense he has no brain. So now he'll lose his head and he'll get the head of a goat. Who's so stupid? So he cursed like that. And then he said, um, that, you Brahmanas, because all the other Brahmanas, they were supporting Daksha. Not in blaspheming Lord Shiva, but, because Daksha was as expert in performing sacrifices. So Brahmanas, they had their, uh, even at that time, they had this, political groups. Like some people are close to somebody and they generally support that person. So, like Brahmana, like Bhrugu and other Prajapatis, they were also, very much, when they favored Daksha because he would perform yajnas and other things, very religious. So, Nandishwar cursed the Brahmanas also. See, you Brahmanas, you people are, although Lord Shiva is being blasphemed, you are just listening without objecting. So, therefore, you people also, in Kali Yuga, you will become very materialistic. You will only perform yajnas just to fill your bellies. So they will only work to fill the bellies. They will be materialistic, and they are very much interested in Dakshina. So that's how the Brahmanas were cursed by whom? Nandishwar. And but at that time the Brahmanas got angry. And Bhrigu Rishi, he was very angry. He said, "How dare you curse the Brahmanas? It is the Brahmanas who are teaching the society how to live and how to perform dharma. They are the ones who connect you with the divine, with the what do you say, transcendence. It is they are the bridge between the material and the spiritual, and you are breaking the bridge by cursing the Brahmanas. Setum vidaranam pumsam. It says that it's a setu. Brahmanas are the setu, the bridge between the material world and the spiritual world. They are the ones who are giving spiritual knowledge, and you are cursing the Brahmanas. Therefore, I curse that the followers of Lord Shiva will be addicted to, wine, woman, intoxication, meat eating, and other things. So that was Brahmana's curse on followers of Lord Shiva. So therefore, we see today those who are like Shaivites or Shiva Bhaktas, there is a tantric pujas and all. They are addicted to all these kinds of things. Bhang lete hain, they eat different intoxicants, and if they eat that kind of very, of course there are devotees of Shiva who are good Brahmanas also, but generally this is the curse of Brahmanas, of Bhrigu. Then there's a cursing and counter cursing, counter cursing was going on, right? First Daksha cursed, then Nandishwar cursed, then the Brahmanas cursed, and so Lord Shiva was witnessing all this, and he became very unhappy, very morose. Why? Because of this attitude, this consciousness. Therefore, he left Lord Shiva. He silently
He did not protest or anything. He just left. Great personalities, they never get angry when they are attacked. That is a very important lesson. Although Daksha Prajapati cursed Lord Shiva, Shiva himself could have cursed, either Daksha or everyone. Lord Shiva was totally silent. He never reacted. Because as a Vaishnava, he is humble. Uh, So it was Nandishwar who cursed, but Lord Shiva himself did not curse or did not participate. Even he didn't even argue. He did not say, you know who I am? I am the Guna Avatar. I am the Lord of the mode of ignorance. I am the controller of the material world. You don't know who I am. How dare you curse me? You idiot. He could have said like that. He didn't say any of that. He did not react. He did not respond. He was just silent. That is the humility of a great person. A great person never wastes his time defending himself or herself when attacked. अगर कोई आपको बोलते हैं भाई तू ऐसा है तो ऐसा है, या कोई आपके कभी कभी सामने बोलते हैं और कभी कभी और खराब आपके पीठ पीछे बोलते हैं किसी और को, राइट? पीपल डू दैट. आपके सामने नहीं बोलेंगे, आपके पीछे आपकी बुराई करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे. So that is, of course, very, very the worst thing to do. That is totally against the Siddhanta of Vaishnavism. The most important thing is a Vaishnava never engages in criticizing anyone or hearing criticism. Speaking criticism and hearing criticism, both are equally bad. So Vaishnava never indulges in that. And because all those Brahmanas who were present in that Sabha, although they did not criticize Lord Shiva, but they were hearing it. And they were silent. So when a Vaishnava is criticized, especially advanced Vaishnava, when a advanced Vaishnava is criticized, or in fact any Vaishnava I would say, but especially advanced Vaishnavas, then one should either protest, say, stop this. This is not the etiquette, or this is not the right behavior. Either you should stop it, ask him to shut up, correct him, or if you cannot do that, if that person is senior to you who is criticizing, then what do? Just leave that place immediately. Close your ears and then say Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu, and just leave that place. That is the Vaishnava etiquette. Raghunath Bhatta Goswami would do that. Raghunath Bhatta Goswami, if anyone criticizes any Vaishnava, even it may be true. Sometimes I think मैं तो सत्य बोल रहा हूँ. अगर आपको लगता है कि वो सत्य है जो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो, even if it is true, still it is having the same effect because criticism is criticism. Yes. It doesn't matter whether it is true or false. So any type of criticism is blasphemy and it is painful to Krishna because yatah khyatim yatam katamo sahate tadvikarha. How Krishna will tolerate blasphemy against his devotees who have dedicated their lives to Krishna's service. So yeah, so therefore, although they did not criticize Lord Shiva, the other Brahmanas, other Prajapatis, they were party to that offense. Therefore, they got cursed. So this is the second lesson, that never criticize others. So what is the first lesson? What is the first lesson? I told you just now. This the time criticizing somebody. That is the second lesson. What is the first? Great personalities don't waste their time in
defending themselves when criticized by others. जब कोई दूसरे हमको क्रिटिसाइज करते हैं, अपना सफाया देना या अपना क्या बोलते हैं आत्मरक्षा के लिए, या अपनी क्या बोलते हैं उसको डिफेंडिंग क्या बोलते हैं हिंदी में, व्हाट डू यू कॉल, आत्मरक्षा, या फिर इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलते हैं सफाई देना, या मतलब खुद का बचाव के लिए बोलना, राइट? They don't do that. Like Lord Shiva did not do that. That's the first lesson. When Daksha was criticizing, Lord Shiva did not react. Devotees don't try to defend, because defending is one of the four animal propensities: eating, sleeping, mating, and defending. So animal has this tendency to defend. उसको कोई अटैक करेगा तो वो अपने बचाव के लिए वो लड़े, राइट? And we also have the same tendency. If you are attacked, then you'll defend. But Vaishnava, they don't do that. Or they don't waste their time doing that. अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपके बारे में खराब बोल रहा है, नहीं 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 ऐसा कैसा बोल सकते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, आप समझे नहीं, ये वो वगैरह, हाँ, so that is also kind of, you are basically respecting or you are protecting your false ego. हाँ, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये तो बकवास है, ये तो नॉनसेंस है, हाँ, this is totally nonsense, how you can say, how you can do. So that is also basically you are acting on false ego. At that time you are not Krishna conscious. प्रॉब्लम ये है, ये सब करने में प्रॉब्लम क्या है, भगवान को भूल जाते हैं हम, मतलब अपनी बचाव में लग जाते हैं। हाँ, अपनी बचाव में लग जाना मतलब क्या है, हाँ, आपकी चेतना आपके अहंकार में, आपके आपके अपने आप के ऊपर है ना, अपने अहंकार में डूबा हुआ है, कृष्ण चेतना नहीं उस टाइम पे। सो देयरफॉर यदि भी शिव जी को शाप दिया गया, शिव जी कभी रिएक्ट नहीं किए। शिव जी खुद तो प्रत्युत्तर दे सकते थे, शिव जी साइलेंट। हाँ, नंदीश्वर ने उसका उत्तर दिया, उसका प्रत्युत्तर देकर शाप दिया। That is the third lesson, that when the master is criticized, the servant should not be quiet. वो बोल सकते थे शिव जी खुद ही कुछ नहीं बोले, मैं क्यों बोलूं, मैं भी चुप रहूं। राइट, शिव जी खुद ही, उनको श्राप दिया गया, तो शिव जी खुद ही कुछ नहीं बोले, तो मैं क्यों बोलूं बीच में, मेरा क्या काम, चुपचाप रहूंगा। नो, हाँ, great personalities criticized, you have to protest. Or if you are not powerful enough to protest, then you leave. Immediately close your ears and just leave. अगर आप में इतनी पावर नहीं है कि उनको शट अप कर सके या उनको वो कर सके, देन चुपचाप वहां से निकल जाओ, और बैठ के नहीं सुनते रहना, हाँ हाँ अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा करके। हाँ, so because Nandishwar was powerful, therefore he protested. So and but then it gradually then it became an ego battle. उसके बाद ego battle बन गया, फिर ब्राह्मणों के लिए ego battle बन गया। तो then when Nandishwar offended, or what do you say, cursed the Brahmanas said, how dare you curse the Brahmanas? You know why we are Brahmanas, we are the, भगवान से आपको जोड़ते हम ही है, हाँ, हमें तो आपको सिखाते हैं कि भाई क्या करना क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत, आपको कितना हिम्मत है ब्राह्मणों को कर्ज करते हो। Therefore we counter curse. Then it came to a material ego platform. See, imagine that is the difference between a Vaishnava and a Brahmana. Vaishnava was cursed, Shiva was cursed, but he did not react. The Brahmanas were cursed, but they react. Vaishnava, when cursed, he does not react, or when blasphemed. अब दामोदर प्रभु बोलो, दामोदर प्रभु, you are so lazy, you are so stupid, you are, like this, you are ऐसा बोलेंगे, दामोदर प्रभु क्या बोलेंगे,
What he will say? He'll say, yes, yes, actually you are right. I'm I'm good for nothing actually. I have no quality. ऐसे बोलेंगे ना. That is Vaishnava because he's a Vaishnava. जब आप उनको गाली भी देंगे क्या बोलेंगे? नहीं सही बात है आपका. मैं तो और खराब हूँ जितना आप बोल रहे हैं ना उससे भी ज्यादा खराब. आप थोड़ा ही समझे अभी तक में. So that is Vaishnava. He did not react like Lord Shiva did not react because he was a great Vaishnava. But Brahmanas, Bhrigu, immediately reacted. हाँ, आप मेरे को श्राप देते हो. अच्छा मैं दिखाता हूँ ना, मैं आपको और बड़ा श्राप दे दूँ. तो ये रिएक्शन जो है ना ये अहंकार का लक्षण है. हाँ, when a person is very proud, he cannot tolerate. जो अहंकारी रहता है ना उसको थोड़ा सा कुछ बोल देता है तो बस हाँ, पूरा रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है. तो जिसको जितना अहंकार रहता है उतना ज्यादा रिएक्ट करता है. जिसको बहुत ज्यादा अहंकार, समवन हैज लॉट ऑफ फॉल्स ईगो, यू डू अ लिटिल, थोड़ा सा सुई चुभ गए बस तो सीधा AK-47 निकाल देगा उसके. मतलब हल्का सा अगर थोड़ा सा भी उनको कुछ लगा बस, और जिंदगी भर के लिए आपको है ना, उसको लेकर मन में रखता रहेगा. लाइफ लॉन्ग ही विल कीप इन हिज माइंड. उस दिन मेरे को सुई चुपा दिया आपने, कैसे हो सकता है ना. एंड ही कैन नेवर फॉरगिव. तो दैट इज द नेचर ऑफ अ पर्सन हैज हाई फॉल्स ईगो. एंड वैष्णव इज ऑपोजिट. आप उनको मार भी दो, इट डज नॉट रिएक्ट. हाँ. हम्म. तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतावपि न प्रतिकुर्वन्ति. एक श्लोक आता है. तिरस्कार हो जाए, विप्रलब्धा अपमान हो जाए, शप्ता श्राप मिले, क्षिप्ता उनको दबा दिया जाए, हतावपि इवन मार भी दिया जाए, वैष्णवास डू नॉट रिएक्ट. तो क्या ये कोई कायरता है? नहीं. ये नहीं बताया गया कि वो लड़ नहीं सकते. ये नहीं बताया गया कि उनके अंदर ताकत नहीं है. ये बताया गया कि वो रिएक्ट नहीं करते. बट ऑफ कोर्स जब भगवान का या दूसरे वैष्णवों का निंदा हुआ तब जरूर रिएक्ट करेंगे. लाइक अर्जुन एंड हनुमान. लॉर्ड शिवा डिड नॉट रिएक्ट. क्या कायर है? वो क्या है लॉर्ड शिवा बाद में पता चला. He did not react at that time. He did not respond. He did not mind. Mind नहीं किए थे. हाँ, but later on what happened, I will tell you the next story. जब सती देवी right, वो जो होने वाला है बताऊंगा मैं. But the thing is, yeah, so Vaishnavas do not react or respond when they are attacked or criticized. They don't try to defend. So 3 lessons कौन सा अभी तक बताया? Vaishnavas don't waste their time defending. Second, never criticize others or tolerate the criticism. If someone is third lesson, they are criticized, then we should either protest or leave the place. तो फिर शिव जी को थोड़ा दुख लगा. क्यों? क्योंकि एक्चुअली शिव जी को दुख लगा भृगु के लिए कि क्योंकि भाई ये अहंकार पे शाप प्रतिशाप ये सब चल रहा है. उसका केंद्र तो मैं ही हूँ. मेरे वजह से नंदीश्वर को गुस्सा आया और उन्हें श्राप दिया. और उसके प्रत्युत्तर में इनको इनने मतलब ये पूरा क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना. सो इवन द प्रजापति दे आर नॉट फ्री फ्रॉम ईगो. वी कैन सी. ये यूनिवर्स का शायद फर्स्ट मीटिंग है. मे बी वन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग्स ऑफ द यूनिवर्स.
जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई उसमें जो सबसे सीनियर जो लोग हैं, ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र हैं सब। हाँ, तो वहां भी ये अहंकार का वो चल रहा है, राइट। तो हम, हमारे अंदर अहंकार हो, उसमें क्या सरप्राइजिंग है। तो उसके आगे देन लॉर्ड शिवा ऑल्सो लेफ्ट वहां से। हाँ, फिर वहां वो सीन खत्म होती है। हाँ, तो उसके आगे फिर क्या होता है, फिर दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़ा यज्ञ का, दक्ष प्रजापति ऑर्गेनाइज बिग यज्ञ, एंड दैट यज्ञ ही इनवाइट्स, ही इनवाइट्स हूम, ऑल द ग्रेट प्रजापति, एवरीवन, सबको इनवाइट किया गया। एंड सती देवी इज द डॉटर ऑफ Daksha. That's why she's called Dakshayani. Dakshayani, a daughter of Daksha. So, so Dakshayani, she sees that so many different flights, helicopters, you know, jet planes, they're all drones, drone technologies. ये सब चल रहा है ऊपर से भी. Of course, they are far more advanced than these drones. सब चल रहा है, like, and all the different ladies, they are like uh, wearing very costly jewelry from Tanishq Punjab jewelers, costly diamonds and everything, and very Kanchipuram saris and very very opulent, ladies जब ड्रेस करते हैं, स्पेशली जब जो रिच जो फैमिलीज के जो लेडीज हैं, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों सिर्फ उनके ड्रेस में लग जाते हैं जो पहनते हैं उतने. तो सो सो वो सब इतना अच्छे से ड्रेस करके, परफ्यूम लगा के सब करके, देयर जस्ट गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हैं. दाक्षायणी सती सियास, यू डोंट नो, क्या आपको पता नहीं, आपके पिताजी तो ये क्या कर रहे हैं, सबको इनवाइट किया गया, आपको नहीं इनवाइट किया. तो दक्ष सती सुन के वाह, हैरान हो गई, तो अच्छा ऐसा. एंड शी सेज, अरे ये तो हमारा घर है, घर घर वालों को इनवाइट थोड़ी किया जाता है, ये तो मेरा पिताजी का घर है, इसलिए नहीं इनवाइट किए होंगे. So then she goes to Lord Shiva and she says, I want to go. Everyone is going. और मेरे सारे सिस्टर्स वहां रहेंगी, लाइक 16 सिस्टर्स हैं. और वो सारे सिस्टर्स ऑर्डिनरी नहीं है. एक तो ये सब कश्यप, अदिति अदिति एंड विनता, कद्रु एंड ऑल दिस ग्रेट देवताओं की माता अदिति, ये उनके सिस्टर्स हैं उनके. और दिति, गरुड़ जी की मम्मी, कौन, विनता, कद्रु, ये जो आनंद शेष, और ये सब आनंद शेष की माता, सारे सांपों की माता कद्रु, ये सब उनके सिस्टर्स हैं. वो सिस्टर्स आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, उनके हस्बैंड आएंगे, सारा गेट टुगेदर होगा. हाँ, मेरी माँ रहेगी, प्रसूति, हाँ, दक्ष की वाइफ प्रसूति. एंड प्रसूति के भी सिस्टर्स कौन है, देवभूति, आहुति, करदम मुनि, ऑल दिस ग्रेट परसेंटेज सब आएंगे, उनके फैमिली सब. सो आई वुड बी एबल टू मीट एवरीवन. मैं जाना चाहती, वो मैं लाइक पार्टीज, फैमिली पार्टीज, मतलब ये वाला पार्टीज नहीं आजकल दारू वाली पार्टीज नहीं. I'm talking about, functions. Functions में मिक्स होना है. So she said, I want to go. Lord Shiva said, I don't recommend. Because you go there, what will happen? Daksha does not like me. He will speak bad things about me, and you will not be able to tolerate that. आप उसको सहन नहीं कर पाओगे. वो मेरी बुराई करेंगे और आप सुन नहीं पाओगे. So many things will happen. Better don't go. But then she said, no, I want to go. I have to go. And Lord Shiva said no, but she was very upset. When woman is upset, then the whole house looks like,
hell. Everything is such, मतलब पूरा सब जगह चारों ओर आग नजर आता है. लाइक शी इज ऐसे ऐसे देख रहे थे शिव जी के प्रति ऐसा. जाने नहीं दे रहे ऐसा ऐसा करके फ्रस्ट्रेशन. एंड देन बट देन शी डिसाइडेड टू गो स्टिल. तो नहीं चली गई. शिव जी कॉल्ड नंदीश्वर and others and said, you go protect, for protecting her. And ठीक है वो गई. और जैसा शिव जी ने बताया वही हुआ. She went and Nandishwar and everyone they also went. Hmm. And they sat and she was totally neglected by Daksha. हाँ, initially neglect किया गया. Of course उनके मदर दे प्रसूति वगैरह ये सब सिस्टर्स वगैरह आए थे उनको तो मिले. But Okay, I found this on the web for initially. Check it out. what is this? गलती से हे सिरी बोल दिया होगा. हाँ, so क्या बोल रहा था? Neglect कर दी तो. Yeah, so they all met, but Daksha, he totally neglected. Hmm. He was saying, "ये क्यों आई? Why did you come?" Type of. And then what do you say? Then he started blasphemy. He started saying bad things, saying that Shiva is like this, Shiva is like that. And when Sati Devi heard this, in front of everybody, then Sati could not tolerate that anymore. Hmm. And she said, I don't want to have, I cannot hear one more second this blasphemy. And I don't want to have any connection with this person called Daksha. But unfortunately, ये जो body है ये उनसे ही आई है ना. I'm her daughter, his daughter. So I don't want to have this body. So she just went into samadhi and she created a fire from her own body. And that way she immolated herself. And then what can anybody do? Immediately Nandishwar sent WhatsApp message to Lord Shiva. Of course, they were faster than WhatsApp. They just came immediately. And as soon as Lord Shiva heard about this, that Sati left her body, and in this way, then Lord Shiva became very angry. And immediately he created Virabhadra. And he told Virabhadra, go and kill Daksha and destroy everything. Lord Shiva is a lot of destruction. When they destroy them, the Muslim terrorists are, वो तो कुछ नहीं है उनके सामने. All the terrorists should take training from Veerbhadra. So then they went, and bas, everything was totally destroyed. They they burnt the beard of Bhrigu, and they broke the teeth of Pusha, another Brahmana, and everywhere they just destroyed everything. Everyone is beaten, or of course, उस time पे तो they were also very powerful, but they could not do anything. And finally, Veerbhadra took Daksha, and वहाँ sacrifice में जो बकरे का सर या किसी भी सर काटा जाता है, that place where the animal is sacrificed, they put Daksha's head over there, and he took a knife and tried to cut it, but it was not being cut. Because Daksha also was very powerful. So finally, he took that knife which was supposed to cut the head of the sacrificial animal, and with that again tried, the head was cut off. And
एंड एवरीवन, जो भी वहां थे, सबको कुछ ना कुछ, किसी का दांत टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का हाँ कुछ ना कुछ, राइट. एंड everyone was, had to pay the price. And of course Lord Vishnu was aware कि होने वाला है, इसलिए वो गए नहीं वहां. Uh, so Lord Vishnu and Brahma, they did not go. So then, finally सब खत्म हो गया. एंड फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सारे देवताएं और ऋषि थोड़े चिंतित हो गए. भाई, अब ये बहुत बड़ा यज्ञ था. इट वाज सपोज टू बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द यूनिवर्स, और वो यज्ञ बीच में ऐसा नाश हो गया. इट इज नॉट वेरी गुड. वी शुड रीस्टार्ट द यज्ञ, एंड दक्षा आल्सो शुड बी रिवाइव्ड. इट्स ओनली पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड शिवा. सो यहां तक का एक और लेसन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज when the scriptures tell you, when the guru or shastras tell you not to do something and you do that, you pay the price with your life. आपकी जान जाएगी. अगर आपको कोई चीज मना किया गया है और वो करोगे तो क्या होगा, यही होगा जो सती देवी को होगा. सती को मना किया शिव जी ने कि मत जाओ, और तो सुनी नहीं और गई. इवन शिव जी ने ये भी बोला था, लॉर्ड शिव इवन टोल्ड हर दैट यू मे हैव टू लूज योर लाइफ. ऐसे भी स्थिति आ सकती है. But still she did not listen. And you don't listen to the advice of senior devotees, advanced devotees, especially those things which are very important, then you cannot be saved. You'll have to lose your life sometimes. So that is very important. Don't neglect शास्त्रिक इंजेक्शन. शास्त्र कहते हैं बार बार कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो. एग्जैक्टली वही करते हैं तो क्या होगा, यू विल लूज योर स्पिरिचुअल लाइफ. बार बार बताया जाता है, डोंट क्रिटिसाइज वैष्णवास और एनीथिंग. वी डू एग्जैक्टली दैट ओनली. कोई मजाक है क्या, यू लूज योर भक्ति. बताया जाता है डोंट एसोसिएट विथ बैड, नेगेटिव, एंड always stay in association of devotees. So things which are told, chant attentively. Don't neglect reading Prabhupada's books. ये सर जो important instructions होता है ना, if you neglect it, it is very very serious. You'll have to pay a big price. So that is another lesson. And when Sati destroyed her body, Lord Shiva became angry. That is another important lesson, that when devotees are attacked, we should not keep quiet. That we already discussed before. And then finally what happened? After some time again, all the demigods, they requested Lord Brahma, that please revive the sacrifice, and please tell Lord Shiva to forgive Daksha and revive him. So Lord Shiva, so Brahma accepted it. It's a risky proposition. He was expecting that Lord Shiva is still angry. But when he went to Kailash, Lord Shiva was very cool and very calm. And he was just sitting and discussing Bhagavatam. I was giving Bhagavatam lecture or something like that with the rishis. And Brahma went and he offered obeisances. And Lord Shiva also offered obeisances. And he was very calm and composed. And he was praising Lord Shiva. And then he requested that please revive Daksha, because he is very important and this sacrifice needs to be completed.
And he was saying that with a smile. So that by chance if Shiva gets angry, then we get pacified. So then Shiva said, "No, I'm not envious of Daksha. I just want to teach him a lesson. That's all. Uh, but okay, we'll make some arrangement." Then he said, "You find a head of a goat, and we'll fix it." So then again, the arrangements for the yajna were made, and that goat's head was fixed on his body, and he was revived by the blessing of Lord Shiva. And when he came back to consciousness, now he started to praise Lord Shiva. He offered, what do you say? He started glorifying Lord Shiva. So that is the thing. So if he would have praised earlier, it would have been better. He would not have had a goat. So he praised Lord Shiva, and then finally, what happened is the yajna was completed, but Daksha could not live very long with that goat head. कैसे शर्म आता है कि मीटिंग में कैसे जाएंगे, कैसे जूम मीटिंग में सब सब देखेंगे कि गोट हेड कौन कहाँ से आ गया, right? So therefore he left his body after some time, and then he was again born as the son of Prachetas in the lineage of Dhruv Maharaj. Swayambhu Manu, son of Brahma, Swayambhu Manu son, Uttarpad son Dhruva, and after some generations, then Prachina Parishad sons were Prachetas son was Daksha Prajapati. This is the second birth of Daksha. First birth was son of Brahma, but second birth was son of Prachetas. He was reborn. But he made a similar mistake again. Because offense when you commit, that tendency remains. Unless you are very, very careful. This time he cursed Narad Muni. First time he cursed Brahma. Second time, what happened? He had first 10,000 sons called Haryashvas. And those 10,000 sons, they went to the forest to do some meditation. They went to school, get a degree, and then we'll get you a job and get you married. That was the plan. पहले उनका डिग्री हो जाए, फिर शादी करवाएंगे और फिर जॉब दिलवाएंगे, शादी कराएंगे. So Daksha is a typical Hindu father. So I was thinking like that. So they went to college, and वहाँ ISKCON वाले मिल गए. The first ISKCON devotee Narada Muni, and he told him, he preached, and they decided to join full time. And then so they left. They didn't come back. Daksha was angry, but he tolerated. He said, "Okay, I have power. I can create more." And he created 1,000 sons more, called Shavalasvas. And then they went to forest again. मतलब फिर वो बोलेंगे ना अनपढ़ है, इसलिए जाओ थोड़ा तपस्या करके आओ. तो again Narad went this time, and he said, देखो आपके बड़े भाई कितने बुद्धिमान हैं, छोटा भाई बुद्धिमान, बड़े भाई को फॉलो करना चाहिए. And they said yes, and they followed. They also went. The most successful college preaching project was by Narad Muni. But generally when you do that, then it goes to the media. People will say, okay, ISKCON wale sab brainwash kar rahe hain, this and that, and फिर sometimes some criticism has to be. So ऐसा ना हो जाए, मीडिया में ना जाए, इसके लिए मैं पहले ही उनको जाके शांत कर देता हूँ. ऐसे सोच के Narad Muni, he goes to Daksha. He knows Daksha is very angry, and he also knows he will curse.
फिर चलो कर्ज कर ले तो कोई बात, मैं ले लूंगा कर्ज, बट शांत तो हो जाए, मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं करेगा। एक बार गुस्सा निकल गया, शाप दे दिया तो थोड़ा ठंडा हो जाए। चलो, ऐसा सोच के he went, and just as he expected, Daksha was so angry. He said, "You Narad, you are a cheater. तो ढोंगी हो, हाँ, भगवे कपड़े पहनते हो लेकिन असल में तुम कुछ नहीं जानते हो, सब धोखेबाज हो, ढोंग करते हो। यू आर जस्ट अ चीटर, यू जस्ट अ प्रिटेंडर, यू डोंट डिजर्व टू बी एसोसिएट ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु ने गलती कर दी है आपको अपने साथ रख के, बिकॉज यू आर टीचिंग नॉनसेंस। अरे पहले गृहस्थ आश्रम का मजा लिए ही नहीं और वो कैसे सन्यासी बन जाएगा? गृहस्थ आश्रम में क्या सुख है क्या दुख है सब जाने, एक्सपीरियंस करें, उसके बाद संन्यास ले सकते हैं 80 साल की उम्र में। हाँ, अब कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया, पहले से आपने करवा दिया, क्या है? नहीं, जब गृहस्थ आश्रम में जाएगा, दुख भोगेगा, कष्ट होगा, पहले तो उसमें मजा लेगा, उसके बाद पता चलेगा कितना कष्ट है। बच्चे होंगे, उनको बड़ा करो, उनका गाली सुनो, सब करो, उसके बाद फिर समझ में आएगा कि इसमें कोई मजा नहीं है, तब जाके वो संन्यास लेगा, तब ये सही तरीका है। पहले गृहस्थ में जाके उसके बाद भले संन्यास ले सकते हैं, लेकिन गृहस्थ में गए बिना आप पहले ही करवा दिए। हाँ? ये उनका उनका थ्योरी है, दक्ष प्रजापति, बट दैट इज नॉट करेक्ट। ऐसा नहीं कि सबको ऐसे ही करना पड़ेगा। Some people who are very intelligent, they can directly, without going to Grihastha ashram, they can directly go to sannyas ashram. And that is allowed. But according to Daksha, नहीं, पहले आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाना। बट ऑफ कोर्स हर कोई ब्रह्मचारी बन भी नहीं सकता, बनना भी नहीं चाहिए, unless you have that high degree of realization and renunciation. हाँ, बट लेकिन वो नारद मुनि की कृपा से they became qualified, but he did not accept it. They said, no, you are just a cheater, this and that, you just leave. फिर वो बोला, I'll curse you, कि आप एक जगह नहीं रह सकते हो, एक जगह नहीं टिक सकते हो। उनको लगा कि एक जगह नहीं टिक सकते तो बहुत बड़ा श्राप। वाई? बिकॉज जब, है ना, जो जैसे those who are, you know, those who want to enjoy in the material world, what they like to do, उनको क्या अच्छा लगता है? हाँ, एक अच्छा कॉलोनी में एक अच्छा मकान ले लो, मकान बनाओ, है ना, मतलब इटालियन मार्बल और हाँ, अलग अलग देशों से अलग अलग अच्छे अच्छे आइटम, कॉस्टली आइटम, यू नो, हमारा हॉल ऐसा होगा, किचन ऐसा होगा, हाँ, ग्राउंड फ्लोर में ऐसे ऐसे कमरे होंगे, पीछे लॉन होगा, और ज्यादा अमीर है तो उसमें एक अच्छा छोटा सा एक मिनी फॉरेस्ट होगा, मिनी जू होगी, पक्षियां होंगी, यहाँ पक्षियां रखेंगे, यहाँ पे कबूतर होंगे, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, खरगोश, खरगोश यहाँ घूमते रहेंगे। हाँ, और हो सकता है यहाँ एक आध हिरन भी रखेंगे। और क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट ब्रीड कुत्ते, जो बहुत महंगे महंगे कुत्ते आते हैं ना, फॉरेन के, हम्म, वो रखेंगे। ओके, अच्छा लॉन मेंटेन रहेगा, और कुछ फल के बगीचे भी रखेंगे। एंड जो बेडरूम में जो है मैट्रेस, बेडरूम में जो पलंग होगा वो बहुत, मतलब इम्पोर्टेड, और स्पेशली बाथरूम फिटिंग्स, बाथरूम फिटिंग्स ना, वी शुड हैव, यू नो, कौन सा कंपनी वो सबसे अच्छा महंगा वाला, एक बार तो सस्ता। वो वाले फिटिंग्स रहेंगे, है ना, एंड क्या बोलते हैं उसको, एसी, मतलब डाइकिन, और ये वाला रूफ में ऐसा, पेंट हाउस में ऐसा कम बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, और वहां आराम से जिंदगी गुजारेंगे। हाँ, अपने परिवार, अपने बच्चों, सब मतलब के साथ, है ना। हाँ, लोकेलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, आसपास इस्कॉन वालों को हॉस्टल में नहीं देना चाहिए, तो
कीर्तन करते हैं, शोर मचाते हैं, सुबह नींद डिस्टर्ब होती लाइक दैट. सो दैट इज द टिपिकल माइंड सेट ऑफ ए ग्रह मेधी. मतलब वो उनको लगता है कि एक जगह वो घूमते रहेंगे तो कैसे रहेगा. मतलब उनको एंजॉय करने के लिए एक जगह स्थिर होना पड़ेगा ना. हैव टू स्टे इन वन प्लेस. हाँ. फिर आपने तो वो सारे इटालियन मार्बल वेस्ट हो जाएगा, वो दूसरी जगह थोड़ी ना जाएगी इटालियन मार्बल. सो देयरफॉर दक्षा थॉट, फिर नारद को जो कर्ज किया है, सो देयरफॉर नारद कैन नॉट एंजॉय. वो सुखी रह ही नहीं सकता, बिकॉज वो एक जगह रह ही नहीं सकता. हाँ, क्योंकि उनका आइडिया क्या है एंजॉयमेंट का, एक जगह बहुत अच्छा विशाल एक, क्या बोलते हैं उसको, सांसद भवन जैसा एक घर बनाओ, और वहाँ ऐश आराम से आसपास के लोग सब सलाम सलाम, हाँ नमस्ते नमस्ते महाराज, तो मतलब आसपास के गांव वाले सब आपको मानेंगे. हाँ. एंड तो इस तरह से वो लाइफ ऐसे इमेजिन करते हैं. तो उनके इसलिए therefore they felt that दक्ष मतलब ही थॉट नारद कैन नॉट बी हैप्पी. तो ही कर्स्ड, ही कैन नॉट स्टे इन वन प्लेस. इतना घोर कर्स दे दिया ऐसा उनको लगा. नारद भाई को लगा ये तो बहुत बढ़िया है. सो दैट आई डोंट बिकम अटैच्ड टू एनी प्लेस. एंड ऑल्सो जहां भी जाऊंगा भगवान की वाणी, भगवान की गाना कीर्तन और कथा करते रहेंगे. नो प्रॉब्लम, वेरी हैप्पी. एंड हाँ, इवन चैतन्य महाप्रभु की किसी ब्राह्मण ने कर्ज किया, आई कर्स यू दैट यू कैनॉट गेट एनी मटेरियल हैप्पीनेस. चैतन्य महाप्रभु बोला अच्छा, वाओ, सो वी डोंट वांट एनी मटेरियल हैप्पीनेस. सो तो इन दैट वे Narmai was cursed, and as soon as Narmai was cursed, he said, "Tad बाढ़, thank you, okay, I accept." ठीक है, ओके हो गया. अब आपका मन शांत हो गया. थैंक यू. ठीक है, आप खुश रहो, ज्यादा परेशान मत रहो. अब आप शाप दे दिया. अब आपका मन शांत हो गया. एटलीस्ट अब आप मैं मेरे बारे में नेगेटिव मत सोचना, ठीक है. ये सोच के ऐसा बोले नहीं, बट दैट्स द मीनिंग. थैंक यू बोल दिया, ओके बोल दिया, चलेगा. सो सी, सेकेंड लाइफ ऑल्सो दक्षा मेड सेम मिस्टेक. पहले तो शिव जी का, इस बार नारद जी का. राइट, सुधरे नहीं. एंड शिव जी ने भी रिएक्ट नहीं किए, नारद जी भी रिएक्ट नहीं किए. अच्छा, वह नारद जी के पास तो ऐसा वाहन नहीं है, तो वो भी कर्ज कर देता वापस. राइट. सो दैट्स इट. व्हाट इज द लेसन फ्रॉम हियर? once you become have a tendency to criticize or offend, सर कटने के बाद भी वो टेंडेंसी नहीं जाती. So therefore, we should be very careful that the samskaras that are created by offenses are the deepest. बाकी अनर्थास फिर भी जा सकते हैं आपकी साधना से. साधना करने से by your साधना, your what do you say, lust may go, right? Anger, illusion, these things also may go. Other anarthas may go, but the anarthas that are created by offenses, they don't go so easily. Until you actually enter into Krishna's लीला, तब तक वो रहेंगे. उसका रिएक्शन जब तक कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक, इवन आफ्टर लिबरेशन इट विल स्टिल कंटिन्यू. अदर अनर्थास दे कैन गो इजीली बाय साधना. साधना करो अच्छे से, आपका आलस चले जाएगा, आपका काम, वासना, ये भी चले जाएगा. बाकी मटेरियल डिजायर्स, ये सब चले जाएंगे. लेकिन जो अपराध करने की जो टेंडेंसी है, वो इतनी इजीली नहीं जाएगी. वो तो एकदम लास्ट में जाएगी. उसके लिए बहुत और वैष्णव सेवा भी करना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा. पर लेकिन ये बहुत इजी हो जाता है जिसको, उस व्यक्ति को हु इज हम्बल.
Therefore, humility is very important. So, humility is the first quality. If you are just humble, then you can easily avoid all the offenses. And all the offenses happen only because we cannot be humble. So much false ego. So, therefore, the first duty of a devotee is be humble. Tolerant. If you are humble, it's easy to tolerate. Because you think I'm not so great anyway. जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं. अगर कोई क्रिटिसाइज करते हैं आपको, you think ठीक है, सही सही तो बात है. देन आपको टॉलरेट करने में मुश्किल नहीं लगेगा. लेकिन अहंकार है, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया आपने, ये अंदर से आता है. देन इमीडिएटली रिएक्ट. और हम्बल है तो सोचेगा ये बात सही तो बोल रहे, ठीक है, सही बात है, एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है. हाँ सही है, अच्छा एडवाइस दे रहा है, स्वीकार करो, उसमें क्या जा रहा है. सो इट्स इजी टू एक्सेप्ट. यू विल सी इट पॉजिटिवली. हो सकता है वो जो कह रहे हैं वो सही है, हो सकता है मैं ही गलत सोच रहा हूँ. ऐसे सोचना, जब सोचने लगोगे तो एक टाइम के बाद आपको लगे हाँ सही तो बोल रहा है. भले 1% तो सच्चाई है उसमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सच नहीं है. ठीक है, जो सच है वो हम एक्सेप्ट करेंगे, खुद को सुधारें. और उनको सुधारना तो हमारा काम है नहीं. हाँ, हम अपने आप को सुधार सकते हैं, दूसरों को नहीं सुधार सकते. तो अगर मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं तो अच्छी बात है कि अपने आप को सुधारने में मदद होगी. उसमें क्या दुखी होना. थैंक यू. ओके, आई विल ट्राई. प्लीज ब्लेस मी. हरे कृष्ण. नो ऑफेंस. एंड यू आर हैप्पी. बट इफ यू हैव लॉट ऑफ ईगो देन, हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आपको पता नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये वो ऐसा. मतलब जैसे पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट एडवाइस. अगर वो एडवाइस कर रहे हैं तो उनको लगता है भाई ये तो अननेसेसरी मेरी बुराई कर रहे हैं, बस वो हमेशा मेरे को वो बुराई सोचते हैं. एक नेगेटिव माइंडसेट डेवलप हो जाता है. अगर वो गलत भी सोच रहे हैं तो भी आपको क्या जा रहा है, अगर मान लेने में, ठीक है अच्छी बात बोल रहे हैं, मान लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छा सुधार लेंगे. सो ऐसा अगर आप एटीट्यूड से देखोगे तो फिर वो आदमी भी सोचेगा कि भाई शायद मैंने ही ज्यादा बोल. एंड इफ यू आर टू डिफेंसिव देन दैट पर्सन से, यार ये तो कभी सुनेगा नहीं, सुधरेगा नहीं, चलो छोड़ो यार, इसको कुछ बोलने की जरूरत ही क्या है, जो करना है करने दो. लाइक दैट. सो वैष्णव is humble. So these are the lessons. If you have these lessons, if you want to be a brahmachari, you have to be very very humble. And those who are humble, they can remain brahmachari because they can be tolerant, and therefore the pride and lust are friends. अहंकार और काम वासना दोनों दोस्त है. हाँ, इसके अंदर अहंकार होता है, काम वासना भी आती है. फिर अहंकार क्या बोलता है, तुम तो ग्रेट हो, तुम तो राजा हो. राजा हो तो रानी भी होना चाहिए ना. ये कहते हैं अहंकार. अहंकार कहते हैं ना, आई एम सो ग्रेट सो देयरफॉर आई डिजर्व टू एंजॉय, है ना. एंड इफ यू आर हम्बल, यू थिंक मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं अपने आप को ही नहीं संभाल सकता, एक और को कहां से संभालूं. So that is humility. So a humble person. So if you want to be a brahmachari, you should be very 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 humble. Those who are very humble, they can sustain, they can remain. And those who have a false ego, in fact, even grahastha should be humble. Not that only brahmachari should be humble. Everyone should be humble, right? Brahmachari all the more. Otherwise, you cannot sustain. Thank you very much, Hare Krishna. Any question? One point I'd like. Yes. Damodar Prabhu.
Damodar Prabhu is going to share his wisdom to all. In this on a study class also, and today. First of all, thank you very much. Prabhuji gave a deep insight, discourse on the subject matter or the lessons, and they are really they will be very, very helpful. Because one Radhanath Maharaj also said in lecture, I was hearing that Chaitanya Mahaprabhu said, just chant the holy name and never criticize anyone and not listen also. Then you'll get the treasure of Krishna. So these two things you need to do. So in this story of Daksh Prajapati also we see. And the most important thing was once he did that, he was beheaded, and then he requested Lord Shiva. He praised him next time, and then next birth he committed that thing again. So because he was not humble, and that was the thing. So that was very important lesson that Prabhuji shared. And, yes, and he said, when we enter Krishna Leela, then it will go. And by the mercy of Guru Vaishnavas only it will go. And one point actually yesterday, like I just wanted to Chris Prabhuji to elaborate. Like Sagar Maharaj, he had 60,000 sons. So when they reached Kapil Muni, so they charged him. They thought that he had stolen the horse. So Prabhupada right, like Kapil Muni did not curse because they did Mahat Vyatikram. So because of heat inside their body, they were burned to ashes. So that point there. So it was not curse. Prabhupada wrote. And, No, not curse. They were burnt. yeah, they were burned to ashes because of the heat generating in the fire. So when we often great personality, so things, everything become against. Thank you very much, Prabhuji, for such. And it was very nice in very good like story way. So बहुत अच्छा, it was very nice to listen. Prabhuji connected with ISKCON also. Yes, that is very very much connecting that we see also. In our case also this happens. Yeah, yesterday the grandfather of this body called me, when are you going to come? I said, अभी तो कोई प्लान नहीं है, कम. So वो बोले कि कब तक कोर्स है, कब पढ़ाई? बोले 5 साल है. तो उसके बाद आके शादी करोगे ना? So मैं बोला पहले पढ़ाई कर लूँ, then कैसे? So But he did not realize it is 5 years of Lord Brahma. Shobhi बोले it is मैं difficult. कर लिया है ना. खुद को मेंटेन करना इतना डिफिकल्ट, काम क्रोध लोभ इतना भरा है, तो then also that's very difficult. It is good to remain in the shelter of Guru and Vaishnava, the Prabhuji in the end, and please dismiss him. Thank you very much, Haresh. You want to say something? Question. Yeah, that's a very nice point. Actually, they were burned by the fire of their own offense. So when you do anything for that matter, nature, reflects your own consciousness back to you. आप गेंद फेंकोगे तो क्या होगा? दीवार पर वापस आएगा. उसी प्रकार से when you commit offense, it comes back to you, right? Immediately. So yeah, nature is very expert. She uses your own energy against you. Using your own energy against you. You exert negative energy, that negative energy is consuming you only.
Yeah. So both are true. Actually, this description is there that Kapila Muni, by his glance, he burned everything. All the 60,000 sons of Sagara. Yeah, what is his glance? His glance is that, they are getting reaction of their own offense. So you don't have to see as two different ideas. It's the same thing, can be explained in two different ways. They are burned by the fire of their own offense, or they are burned by the glance of Kapil Muni. They're both same. Yes. Okay, ओके बट ऑनलाइन भी है, पहले ऑनलाइन ले लो क्या? ओके नेक्स्ट, वो लोग पहले से एक्चुअली हैंड रेज कर रहे थे. नेक्स्ट जेसी. हरे कृष्णा भाई, दंडवत प्रणाम. When did you come? मैं कल मॉर्निंग आऊँगा. No, I'm saying when did you come to the class? I did not see you before. मॉर्निंग शुरुआत से ही हूँ क्लास. अच्छा, I didn't see you. Okay. All right. Yeah. So. जी भाजी. भाजी, thank you very much for the class. As Damodar Paji shared many things we got to learn today, and many lessons were there. I had a few questions. I think 3 or 4. Sorry, before I interrupt you, can you quickly summarize the lessons again? Number 1. Great devotees don't waste their time in defending. Second. Never criticize or hear criticism. Third. When master is criticized, servant should. Yeah, when a master is criticized, servants not tolerate. If they have the power, they stop it, or they leave from that place. Fourth. Reaction is the servant should react. Fourth. When you do anything, पिक्चर्स ऑफ गुरु जब कुछ बोलते हैं तो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आखिरी में वो आपकी डेथ करता है. Yes. So what were you saying, Sukhdev? Fourth lesson: when you do anything against Sadhu Shastra Guru, you will lose your life. You may have to pay the price with your life. When important instructions are, रेलवे स्टेशन में लगता है ना, जब पुल क्रॉस करते हैं ना, रेलवे पुल, वहां लगता है 25,000 volts डोंट गो नियर. और रहता है ना रेलवे का पूरा लाइन, मतलब ऊपर से जो बिजली का लाइन, वहां ज्यादा जाएगा, कोई ज्यादा हरकत करेगा, टच करेगा तो क्या होगा? क्या हो जाता है? वो राख हो जाता है, क्या हो जाता है? I don't know, जो भी होगा, जिंदा तो नहीं बचेगा. So like that. So the instructions are like very serious, so we should not. Then fifth. Fifth is, if you develop the tendency of criticizing, then even after your head is, अगर आपकी टेंडेंसी बन जाती है क्रिटिसाइज करने की, तो इवन डेथ के बाद भी गला भी कट जाए तब भी वो रह जाती है. दक्ष प्रजापति की कैसे. Yeah, but I think I have told few more other things also. What else? I said we should be humble. By being humble, you can actually overcome many things. The tendency to offend and criticize can be easily overcome if you are just humble. Just by being humble. Because pride and lust are friends. A proud person is lusty, and a lusty person is proud. So, if you're humble, then you can, just by being humble, you can actually avoid all these things totally. Yeah, so these are some of the important lessons. Maybe I'm missing one or two. Even those who are party to the offense, they also get reaction. Like, this is another important lesson. Though, like Bhrigu and all, they did not offend, but they were party, they were sitting silent, so therefore they got the reaction also. Like Draupadi, when she was being disrobed, Dushasan and Duryodhan did it, but others were silent. Like Bhishma, Drona and all. So they had to also pay the price.
Okay. Yeah. What's your question? अरे जी अरे मैं क्वेश्चन ये था फर्स्ट वन इज दैट मतलब एग्जैक्टली हाउ डू वी डिफाइन क्रिटिसिज्म दिस इज नोन एज क्रिटिसिज्म it's like sometimes it's we can say as a matter of service, yeah, just we need to speak some things out to be known about someone that these things are wrong in that person and that should not be followed. So does it also comes under criticism? क्योंकि जैसा आपने बोला वो सच हो या झूठ हो अल्टीमेटली है तो वो क्रिटिसिज्म ही. So how do we define that this is criticism and this is not? Two words: अधिकार and सेवा. Right? Judge will not say, कोर्ट में जज नहीं बोलता है कि I don't like to criticize. So therefore, like, I cannot give punishment. Criticism नहीं करना हमको. ये कोर्ट में लॉयर भी नहीं बोलता है कि cannot criticize him. उनका काम ही criticize करना है. See, the thing is, if you are in a position where you are supposed to, take action, you are in an administrative position, managerial position, where it is your duty, that is different. Then you have to take action. And also, if that is your seva, if you have the mood of seva, sometimes even senior वैष्णव को भी जाके बोल सकते हैं अगर आपके अंदर सेवा मोड है. Like even someone who is on an authority position, we cannot advise generally authorities, but if you really feel that मैं सही में मतलब उनको हेल्प करना चाहता हूँ, तो फिर आप उनके पास भी जाके you can go when he's alone, you can just go and say, प्रभु जी मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बट कुछ चीजें जो मेरे को थोड़े से लग रहा है कि अगर ये आप इस पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और लोग भी आपको और अप्रिशिएट करेंगे और आप मेरे को लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा. तो प्लीज डोंट, इफ अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ. तो वैष्णव क्या बोलेगा? यस यस प्लीज बताइए. क्या है? आई विल बी हैप्पी टू हियर. एंड देन यू कैन से, प्रभु जी मैंने ऑब्जर्व किया कि ये चीज आप थोड़ा सा इसमें आप कुछ एक्शन लेंगे तो अच्छा रहेगा. ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया. दैट इज बिकॉज देयर यू हैव एटीट्यूड ऑफ सर्विस. आप कोई ईर्ष्या से या अहंकार से नहीं बोल रहे. हाँ. एंड ऑल्सो यू टेक परमिशन बिफोर सेइंग. सीनियर वैष्णव को बोल रहा है. सेम थिंग विथ योर इक्वल्स ऑल्सो यू कैन. But when you are in a position where you have to take some action again from on some junior, then senior को right है, and especially when he is in a position of either authority or guru, then उनको तो correct करना ही उनका काम है, उनकी सेवा है. But of course, it should be sensitive that I am not doing out of envy or I am not doing out of ego. या ये prove करने के लिए मैं better हूँ और ये खराब, या उनकी बुराई करने के लिए, उनकी image खराब करने के लिए, और उस उद्देश्य से तो नहीं कर रहा है. अगर वो उद्देश्य से कर रहे हैं तो जूनियर भी हो तो भी ऑफेंस होगा. अगर जूनियर का भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो भी ऑफेंस. इफ योर मूड इज जस्ट टू शो हाउ बैड ही इज और हाउ गुड यू आर and just to character assassinate that person. But if your mood is actually to help or to do your service, right, or sometimes to protect your juniors. Like for example, किसी के अंदर टेंडेंसी बहुत खराब है, हम आपको बोलना चाहते हैं कि आप उनके पास ज्यादा पास मत जाओ, क्योंकि उनके पास ज्यादा पास जाओगे तो फिर हो सकता है कि वो चीज आपके अंदर भी, वो मतलब आपको भी, जैसे शिवजी ने भी बोला था ना सती को कि डोंट गो टू दक्ष. Shivji was not criticizing Daksha, he was trying to protect Sati. Because if she goes, this is what will happen, he knows. So Shivji, when he told Sati not to go to Daksha, that is not Vaishnava. That is, he is trying to protect Sati Devi. He did not want intend to, उनके पिताजी का बुराई करके बेटी के सामने. ऐसा नहीं उनका उद्देश्य. उनका उद्देश्य है भैया वहां जाओगी तो फिर ये सब सुनने को मिलेगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको खुद
खुदकुशी करना पड़ सकता है, तो इसलिए बेटर ना जाओ उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा कभी कभी बोलना पड़ सकता है, इफ यू आर इन दैट पोजीशन, बिकॉज it's your service to protect them. But your intention should be very clear. Am I saying out of envy? Am I saying out of hatred or anger? That is very important. Okay? हरे कृष्ण भाई, दंडक जी भाई, परफेक्टली आंसर, थैंक यू। Okay. So, Himanshu Prajapati, and then both of you. Yes, Himanshu? हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस क्लास, बहुत अच्छे अच्छे लेसन थे इसमें। तो जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसा कि एक पॉइंट बताया था कि जो वैष्णव अपराध करने की टेंडेंसी रहती है, वो सारे अनर्थास तो चले जाते हैं साधना से, बट ये जो टेंडेंसी रहती है ये इवन जब तक कृष्ण की लीला पे एंटर नहीं करते तब तक नहीं जाती है। तो मुझे क्वेश्चन ये था कि जैसे बताते हैं कि सबसे बड़ा ऑफेंस वैष्णव अपराधी होता है, मतलब हाथी जैसा रहता है जो खेत को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ब्रो जी, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी के पास ये टेंडेंसी हो और वो कृष्ण लीला तक पहुंच जाए, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? वेल, वो टेंडेंसी खत्म होने के बाद ही कृष्ण लीला में जा सकते हैं। सो दैट इज एट दी, मतलब व्हेन यू, मतलब ऑलमोस्ट अंटिल, मतलब उससे पहले तक रहती है, कहने का मतलब जाने तक रहती है, मतलब ऐसा नहीं कि जाने के बाद फिर छोड़ती है, ऐसा नहीं, छोड़ती है फिर जाते हैं, ऐसा, like that. So what I'm going to say, even after liberation it may be there. लिबरेशन के बाद भी हो सकता है वो टेंडेंसी। Someone may be liberated in the sense, मुक्त आत्मा हो सकता है, नामाभास कर रहा है, एंड ऑफेंसेस से भी मुक्त है, बट द टेंडेंसी ऑफ ऑफेंस स्टिल रिमेन। So to counteract that, what we need to do is वैष्णव सेवा। जिनके प्रति अपराध हुआ है उन्हीं की क्या करना है, सेवा करना है। अगर आपने किसी को गाली दिया, गलत गलत बोला उनके बारे में, तो बोला बहुत हार्ट में चले जाता है। अगर वो माइंड भी नहीं करता है तो भी ऑफेंस तो हुआ है। देन व्हाट यू डू, देन यू स्टार्ट ग्लोरीफाइंग, उनकी तारीफ करो। जब रियलाइज हुआ है तो उनकी तारीफ करो, सबके सामने उनको अच्छा अच्छा बोलो, एंड देन इंक्रीज द फेथ। एंड इफ यू डू दैट कंसिस्टेंटली फॉर सम टाइम, फिर आदमी वो भूल जाए, फिर तो यू कैन काउंटरैक्ट इट इजीली and consistently so. And again, ऐसा again don't take another break. And अभी वही ग्लोरीफाई कर रहा है पिछले 2 साल से, अभी 2 दिन का ब्रेक लेके थोड़ा और गाली देते हैं, फिर से कर लेंगे ग्लोरीफाई, ऐसा नहीं। So once you realize, you never again criticize. So then you counteract it, especially by serving and by glorifying. आपका स्कूटी मान लो कोई ले गया, ठोक दिया, लाके दिया, सॉरी बोले तो हो सकता है। हाँ, नया स्कूटी दिलवा दो, कोई बात नहीं। Right? So in that way. ऐसा नहीं फिर से ठोके फिर नया स्कूटी दिलाऊंगा, फिर नहीं चलेगा काम। यस। थैंक यू प्रभु फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कई बार क्या रहते हैं जैसे मैनेजमेंट में, और हम भक्तों के साथ डील्स करते हैं, एंड हम भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं, काफी वक्त में हम बीच में रहे हैं, बट ऐसा होता है कि भक्त सामने वाला कई बार गलती कर जाता है, या हमसे भी हो जाती है, या मतलब सामने वाला गलती कर देता है, तो मतलब मेरे माइंड में ऐसा नेचर आता है कई बार, यार अ, मतलब माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है कि इस व्यक्ति को हम क्रिटिसाइज करने का मतलब
तो उस सिचुएशन में अपने माइंड को कैसे कन्विंस करके उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज को देख के उसके नेगेटिव क्वालिटीज को जज ना करें, तो उससे माइंड को हम कैसे कर सकते? कई बार माइंड एक्सक्यूजेस देता है, सर हम सही है, ऐसा एक्सक्यूजेस देने लगता है। पर हम उस सिचुएशन में कैसे हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब मेरा प्रश्न ये है। तो होता है कई बार ऐसा डिवोटी। आई अंडरस्टैंड कैसे का क्वेश्चन, कैसे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, यही है कि उसको सिखा के कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई उसके लिए थोड़ा रेंच और हैमर और स्क्रू ड्राइवर वगैरह थोड़ी ना लगेगा उसके लिए, कैसे कर सकते हैं मतलब हम तो कैसे समझ सकते हैं कि बता कर कि भाई ये नहीं करना चाहिए इस शास्त्र में कहने से, या सब याद करके जो हमने पढ़ा सुना सब कुछ याद करके नहीं करना चाहिए, उसमें कैसे का मतलब क्या होता है? नहीं, मतलब पॉइंट ये है कि हमारा माइंड ऐसा एक्सक्यूज देने लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो सही, मतलब आप किसी को इनके बारे में बोल दो जाके, मतलब कि यार ये सेवा नहीं कर रहा है या सेवाओं की वजह से इसकी दिक्कत हो रही है, तो इसके बारे में कई मतलब कुछ सेकंड समय तक तो चुप रहते हैं, पर एक पॉइंट के बाद ऐसा आता है कि यार बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम पर फंस जाएंगे, फिर वो हम पे आ जाती है बात। इसलिए तो उस सिचुएशन में क्या करें, मतलब ऐसा लगता है कि हम बोल देना चाहिए, पर वो भी गलत है, पर कैसे हम उस I already told you, if you want to help that person, then you can go in a humble way and try to, especially alone, just go and then in a humble way just say in a service mode without being angry or without envy, then he may accept it. Otherwise, there's no point in just. Or if you have a relationship, then you can scold also. हाँ? जिनके ऊपर आपका डीप फेथ है, वो अगर आपको डांटते भी हैं तो आपको मतलब अच्छा लगता है, इन द सेंस यू फील दैट ही इज, कैन फील दैट ही इज लविंग मी, उनका लव है, उनका केयर है, लाइक दैट। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ relationship or that kind of influence, then you can sometimes scold, chastise also. Sometimes senior devotees may chastise even without reason. कभी कभी अकारण भी डांट होता है कभी। So that's okay because if the senior devotee is also not trying to release his frustration, but he's basically trying to help that person, and that person also has faith, then you can chastise also. But if you have a friendly relation, then you need to have a humble attitude. And if it is senior devotee, you should be even more humble to express it in front of senior. See, मेरा वो नहीं था chastisement, I am talking about criticism है, मतलब उस व्यक्ति के बारे में किसी को बोल रहे हैं यार वो गलत है, वो ऐसा कर रहा है, तो उस वक्त माइंड को कैसे कंट्रोल? मैंने देखा इस सिचुएशन में हमेशा माइंड कॉन्शियसनेस बहुत खराब होती है। ऐसा लगता है कई बार अगर वो नहीं बोल रहा है, ऐसा लगता है अगर नहीं बोला उस सिचुएशन में तो यार हम फंस जाएंगे, या फिर वो हमारे बारे में कुछ बोल देगा, या फिर ऐसा है वो बोल रहा है, हम कब तक चुपचाप रहेंगे, शांत रहेंगे, तो फिर हमको भी किसी और को बोलना पड़ता है, तो इस सिचुएशन में थोड़ा वो होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता, तो इस सिचुएशन में क्या तो सिचुएशन में याद करना चाहिए आजकल ऐसे। हाँ हाँ भाई वो नहीं आता, माइंड एक्सक्यूजेस देने लगता है बार तो बार। माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, माइंड को बताना चाहिए हाँ कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। बाय जस्ट रिमेम्बरिंग व्हाट इज द राइट थिंग, कैसे करोगे, कैसे का मतलब क्या होता है? There's only one way, just remember that what you have heard. Use your intelligence, tell your mind. अगर वो आपकी बुराई कर देगा तो करने दो, क्या दिक्कत है? पहले ही तो बताया है that a devotee डिफरेंस आंसर। doesn't try to defend. So what is the problem? You just train your mind, tell your mind कैसे करना है। उसको समझा के, उसको मतलब बुद्धि का प्रयोग करके माइंड को कंट्रोल करना है। There's no secret formula or anything. ये सब पढ़ के सुन क्यों रहे हैं? ताकि वो याद रखने के लिए, याद करना चाहिए जो भी हमने पढ़ा सुन। माइंड को सुनाना चाहिए बुद्धि के द्वारा, भाई आप जो सोच रहे हो गलत है।
ओके, एनीथिंग एल्स? जिनको जाना है जा सकते हैं। यस, एक्चुअली 7:15 को ही मतलब 8:15 को ही जा सकते हैं, मतलब क्लास इज सपोज टू बी टिल 8:15 ओनली। अभी तो 9:15 हो गया। जिनको भी जाना है पहले ही जा सकते हैं, मतलब आखिरी तक रुकने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कभी लंबा लंबा लेक्चर दे देता हूँ, बिकॉज वो टॉपिक पूरा कवर नहीं हो पाता है जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, दक्ष प्रजापति में ये ईगो आया कैसे? ये और हाँ, ये ईगो आया कैसे, और वो और हम क्या ऐसा करेंगे? ये ईगो, मतलब ये ईगो अगर है नहीं तो हम इसे बढ़ाएंगे। ये ईगो आया कैसे दक्ष प्रजापति में, और अगर हमारे अंदर है तो उसको बढ़ाया नहीं, उसके लिए क्या करें? एक्चुअली टू रीजंस, वन स्मॉल रीजन, वन बिग रीजन। ठीक है, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग फ्रॉम बाथरूम। क्वेश्चन हाँ, और कोई कॉल लगा रहा था, कोई कॉल आया नहीं, मेरा कॉल नहीं है, वो फोन नहीं करना है। इस वीडियो में रोक तो उनको बोल दीजिए जी, अनुष्का। हाँ, पता चलेगा आपको, आपको मेडिकल मेडिकल से मेडिसिन now Shri. That don't matter. No. That's the most important one. They might be the third one. Yes. Okay, your question. It's because one small reason, one big reason. One small reason is small reason नहीं कहूँगा, मतलब immediate reason and then the bigger reason. Immediate reason is because he identified himself with a position. पोजीशन है ना प्रजापति का, तो इसलिए आई एम सन ऑफ ब्रह्मा, यू आर आल्सो सन ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, तो कहाँ बड़ा, तो यू आर आइडेंटिफाइंग योर योर सेल्फ बेस्ड ऑन योर पोजीशन, बट एक्चुअली पोजीशन से मतलब नहीं है। Devotee should not identify with the position. Generally, if you are a temple president, then you think, I am also temple president, you are also temple president, right? Or I am also preacher, you are also preacher, right? So like that we see, but that is not the way. You may be temple president, another may not be temple president, but he may be 100,000 times more advanced than you. So you don't see by the position, you see by their degree of devotion, their degree of standard of devotion, their seva. Gaur Gopal Pro is not temple president, not even vice president, nothing. He's just a preacher. Or
So one may not be in any kind of position, so to speak. Like Amogli Dabro, for example, he's also not president. No, he's not even vice president. Vice president है अब वो दूसरे टेम्पल में आ गए. So anyway, this is just. So what? I'm not talking about only those people. We can also talk about many others who may not be that kind of preachers also. Like I know some devotees in Mayapur. They don't have any position, but they are serving in Mayapur for the last 30 years. 35 years. Same seva. Without any desire for position or fame or followers or anything. So when you identify yourself, he thought that Shiva, he saw Shiva only in terms of position. He's one of the Prajapatis. He doesn't know actually his real greatness. So हम बस अपने पोजीशन से और पॉलिटिकली सोचते हैं. भाई मैं भी मैनेजमेंट में हूँ, आप भी मैनेजमेंट में हैं, आप क्या? राइट. मैं भी टीएमसी में हूँ, आप भी टीएमसी में. मैं भी तो बेस चलाता हूँ, आप भी बेस चलाते हैं. Like that we think. मैं भी तो 2 साल पहले दीक्षा ली, आप भी 2 साल पहले दीक्षा ली. आपका दीक्षा मेरा दीक्षा एक साथ ही तो हुआ, या फिर एक आसपास ही हुआ. Like that, where the positions and like that, external things. Yeah, I'm guru, I'm sannyasi, I'm GBC, I'm temple president, I'm this and that. Doesn't make any difference. I'm senior. मैं 10 साल हो गए मेरा दीक्षा लेके. आपको कितने साल? 10 साल. So you are nothing. Like that. So that is the reason why Daksha committed offenses, because he was too much identifying with his upadhi. Not only position, but upadhis. Upadhi मतलब क्या है? What is the word for upadhi? Designations. Yeah, designations. Okay, I am an engineer from JC. I preach in IIT. I have so many followers. If I conduct yatra, 1,000 people come. If you conduct yatra, only 50 people come. What is the comparison between you and? आप यात्रा करते हो तो 100-200 लोग आते हैं. मैं यात्रा करता हूँ तो 2,000 लोग आते हैं. मेरे YouTube चैनल में 2 million सब्सक्राइबर. आपके YouTube चैनल में 2,000 सब्सक्राइबर. राइट. मैं कल्टिवेट करता हूँ अरबपति लोगों में. मैं एक बार डोनेशन चेक लाता हूँ 1 करोड़, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, करोड़ों में लाता हूँ. आप लाते हो हजारों. मेरे कॉन्टैक्ट सीधा मंत्रियों से. आपके कॉन्टैक्ट ज्यादा कुछ है नहीं. ये सब designations. So we identify with those things. That is the first reason. That's why he was so proud. Second reason is bigger reason. Because he did not surrender to a pure Vaishnava who can क्योंकि कान खींच सके. ऐसा नहीं था. ब्रह्मा जी तो थे, लेकिन ब्रह्मा जी को भी वो जस्ट ऑफिशियली रिस्पेक्ट करते थे. ऐसा नहीं कि भाई फुल्ली सरेंडर्ड डिसाइपल है ब्रह्मा जी के. ऐसा नहीं. That's the thing. If you are surrendered to Vaishnava, then Vaishnava can train you. He can correct you. When you are independent, then you are proud. Nobody can. कोई है नहीं जो आपको कान खींच सके. कोई कान खींचते हैं तो हम क्या सोचते हैं?
भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हमें मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं। ये तो हमें कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मैं तो इनके हेल्प के बिना भी सब कुछ कर लूंगा। Why do I need? Why you need senior devotee to pull your ear to say you rascal, do the right thing. You are doing wrong. ऐसा कहने वाला चाहिए। वो नहीं था, इसलिए वो जो कुछ कर रहा है अपने आप से कर रहा है। कौन करेक्ट करेगा वो? और वो करेक्ट करेगा तो क्यों सुनेंगे? दैट इज द बिगर रीजन। इफ देयर इज समवन, अगर कोई उनका मेंटर होता, काउंसलर होता, तो व्हाट्सएप करता है, स्टॉप दक्षा, व्हाट आर यू डूइंग? उसी सभा में होते, दक्ष प्रजापति जस्ट बी साइलेंट, दिस इज नॉट वैष्णव एटिकेट, यू नो। ऐसा बोल के उनको चुप करके बैठा रहता। हाँ? भूल गए भागवतम क्लास? लाइक दैट, यू कुड हैव मेड हिम हम्बल। बट ऐसा कोई था नहीं उस सभा में जो दक्ष प्रजापति को डांट सके, सही कर सके, नंबर बना सके। That is why it's always better to be in the care of some senior Vaishnava who can correct us, who can chastise us. When we go wrong, he can pull us. And that by serving senior devotees, that humility will come. वो नहीं, उनके पास नहीं था। That is the bigger reason. Okay. So does the position of a menial servant also cause ego? does the position of menial servant also cause ego? Yeah, ego should be there, but not false ego. Real ego. ईगो के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मैं कौन हूं, कुछ तो हूं ना। नॉट दैट मैं तो शून्य हूं, ऐसा तो नहीं। आई एम समथिंग ना। व्हाट इज दैट समथिंग? सर्वेंट ऑफ कृष्णा, सर्वेंट ऑफ कृष्णा। That identity should be there. We have an identity. But identity is that we are very insignificant servant of Krishna. Insignificant servant of the servant of the servant. That is a real identity. That will not cause pride. Okay, anything else? Should we stop? I think Surya Prabhu has one or two questions more. ठीक है, बाकी आप लोग जाइए। अच्छा, आप लोग तो पहले क्यों नहीं रहे? तो जल्दी बोलो। तो प्रभु जैसे हम लोग देखते हैं कि वो दुर्योधन भी कृष्ण को देखते थे और वहां के टाइम पे भी जो लोग थे तो कृष्ण के दर्शन करते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कृष्ण जी भी आ रहे हैं, सभा में दर्शन कर रहे हैं। तो ऑल मतलब आंसर है, बट एक बात कि मतलब फिर भी हम देखते हैं दैट कृष्णा इज मोस्ट अट्रैक्टिव, विष्णु इज मोस्ट अट्रैक्टिव। फिर भी वो अट्रैक्शन मतलब जो एक नेचुरली होना चाहिए, जो एक लव नेचुरली आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं आता है। सो वी से बिकॉज लव नहीं है इसलिए वो ब्यूटी नहीं देख पा रहे हैं। But it's absolutely beautiful. Must be attractive. What the question? ऐसा क्यों नहीं है? वो attraction should be there. मतलब लेकिन वो नहीं है because they don't love. इसलिए वो attraction नहीं है, but should naturally be there because he is absolutely attractive. Why we don't have love and attraction to Krishna? Although he is attractive. And हमारा नहीं है ना, साथ में वो जो लोग उनको देख रहे हैं डायरेक्ट, उनका भी नहीं है ऐसा। दक्ष प्रजापति भी देख रहे हैं। प्रजापति है, दुर्योधन है, अदर पार्ट। Good question. Reason is they are not they are not really seeing Krishna, although they are seeing Krishna. That is the answer. उस कृष्ण को देखते हुए भी कृष्ण को नहीं देखा, बिकॉज कृष्ण को देख रहे हैं लेकिन कितना समझ रहे हैं। That is what causes the attraction.
राइट। कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन कितना देख रहे हैं, कितना कितना दिख रहा है आपको? जो दिख रहा है, we are only seeing one aspect or one very limited personality you are able to perceive. The perception is not just based on what you see through these eyes. The perception is based on what you know about the person. Yes. Perception is not just what you see physically. Right? For example, Prabhupada जी खड़े हैं, कोई देख रहा है, क्या देखेगा, क्या समझे? Old man, a monk. That's all. But ISKCON का कोई सीनियर, कोई डिवोटी, वो देखेंगे प्रभुपाद, कौन आचार्य? The appreciation is different. So like that. So you appreciate based on what you know, not just based on what you physically see. So sight is not just what you do with these eyes. Sight is actually a wholesome experience, which includes not only what you physically see, but also what you know, what you heard, what you experienced, everything. Then everything together forms the perception. So without that devotion, without that premanjanacharita bhakti vilochana, so without that prema, you may see Krishna, but still while seeing also you're not seeing Krishna. Right. And that actually comes when you serve the devotees. That perception will come. मतलब कि ऐसा हो सकता है क्या? फिर जैसे लाइक जो ह्यूमंस है, वो ह्यूमन को ही अट्रैक्टिव लगते हैं, ऐसा कुछ होता है? जैसे दूसरी स्पीसीज उस तरीके से मतलब परसीव नहीं कर पाती। अब दूसरे स्पीशीज की चिंता क्यों होने लगी है आपको? No, समझ। You're thinking that if you go to this other species, then will you be attracted or not? I don't know what is the point of your question, but yeah, Krishna is attractive to everyone, na? Krishna is attractive to peacocks and cows and deer and everyone. So it's not even the species, it's the devotion that actually causes the attraction. That's the main thing. It's your devotion that causes the attraction. Without devotion, you cannot feel it. So if someone is a devotee, even in the body of a cow, can be attracted to Krishna. Someone may be a human being, but if he is not devotee, not be attracted. Okay? To the bro. I'll take one more question. कृष्ण चैतन्य प्रणाम। जी जी। Question was actually I had two more. I need to select which one to ask. Just 1 second. हाँ, सो जब वो नंदी जी रिप्लाई की मतलब कर्ज किए इन सपोर्ट ऑफ लॉर्ड शिवा, जो आपने बताया कि सही था, ऐसा करना चाहिए सर्वेंट को, बट देन व्हेन इट कन्वर्टेड इनटू एन आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर कर्सिंग, सो वाज इट राइट और what should he could have done at that time? मतलब वो कंटिन्यू करना Nandi or the चाहिए? Brahmanas? नंदी जी जब शुरू किए, बट उसके बाद जब काउंटर कर्सिंग शुरू हुआ, तो देन नंदी जी को स्टॉप करना चाहिए था या सही किया उन्होंने जो किया? काउंटर कर्सिंग करने के बाद क्या स्टॉप करेंगे? नहीं मतलब बिकॉज इट वाज गोइंग ऑन, उन्होंने कर्ज किया, फिर इन्होंने कर्ज किया था। हाँ, तो उन्होंने कर्ज करने के बाद जब वो वापस करेंगे तो
उसके बाद ये क्या कर सकते हैं? They could have stopped and went back with Lord Shiva. That's what he did. एक ही बार तो कर्ज किया, उसके बाद उन्होंने कर्ज किया, उसके बाद फिर से कर्ज तो कहाँ गए? Nandishwar, he cursed when Shiva was offended, then he cursed Bhrigu, Daksha and Bhrigu, Daksha and all the Brahmanas. That's it. उसके बाद the Brahmanas reacted. And then Nandishwar, it doesn't say, has reacted again. So, yeah, when you go into a war, be prepared to die or get hurt. Even if you win, you still have कुछ दागे निशाने तो होंगे, right? So Nandishwar decided to take action because of his loyalty to Lord Shiva. But when he took action, naturally सामने वाला भी तो कुछ तो करेगा, आपको थोड़ी ना चुप रहेगा. So it came. So, but उनका काम तो हो गया. He already made the curse. So that's done. Material world is such that this kind of situations will come even if you want to avoid it. अब अवॉइड करना चाहता फिर भी वो आ जाता स्थिति, क्या कर सकते हैं? शिव जी गए, उनके साथ नंदीश्वर गए और फिर ये सिचुएशन आ गया. और अननेसेसरली दक्ष प्रजापति ने कुछ बोल दिया, फिर क्या कर सकते थे नंदीश्वर? चुप तो नहीं रह सकते. शिव जी बैठे ही थे ना वहां पे, तो फिर he had to take action. And that again, now when someone commits offense, whoever is party to that offense, they also get reaction. If there is a war between two countries, ऐसा नहीं कि पहले जमाने में ऐसा होता था कि ओनली जो युद्ध में जो सैनिक खड़े हैं उन्हीं के साथ युद्ध किया जाता था. But nowadays it's not like that anymore. You drop a bomb, everyone dies. Civilians, ordinary people, everyone. And the other country is also going to do the same thing. He'll also drop a bomb. Then you cannot say only जो ये तो बच्चे हैं छोटे, तो कुछ किए नहीं, ये तो बेगुनाह है, इनको क्यों हुआ है? So everyone who is party to that offense gets the reaction, even if you are party unknowingly. You are with that person who has committed offenses, so you will get the reaction. So that is okay. जी भाजी. Yeah. Thank you भाजी. So shall I end now? I'll end. जय श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद. कृष्णार्चन गुरु जी की Okay, Sukhdev bro, you had one more question, no? जी भाजी. Okay, finish it. इसको उठा लीजिए. Actually, it was regarding the pastime. थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए था पास्ट टाइम को लेके कि जब वो सती जी का बॉडी बर्न हो गया था, उसके बाद द वे आई रिमेंबर वो वाला पास्ट टाइम की सती जी को लेके शिव जी डांस करते हैं एंड उनको फिर कंट्रोल करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए विष्णु जी आके सुदर्शन जी से सती जी के बॉडी के पीसेस कर देते हैं. एंड देन वो जो एक एक टुकड़ा जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ पे अभी शायद कुछ तीर्थ स्थल हैं. हाँ. सो वो पास टाइम होता है ना अभी, मतलब बट अभी जैसे हमने सुना कि वो तो शिव जी तो ऑलरेडी ही वॉज काम एंड कंपोस्ट वीरभद्र को वो करने के बाद. No, see, I'm not giving a day-to-day, what do you say, schedule of Lord Shiva की क्या अगले दिन क्या हुआ, कितने बजे क्या हुआ.
Certain things must have happened in between. A common compose would have happened after that. I mean, when Sati left her body, this again when Lord Shiva was common compose, this is after some time. And this particular pastime of Lord Shiva dancing, or not dancing, was carrying the body of Lord of Sati and dancing. This must have been immediately at the time when Sati left her body, soon after that. So Bhagavatam is not narrating every day-to-day activity, if that should be understood. It is narrating certain important events. Not that every event, everything what happened has been narrated in Bhagavatam. That is should use some simple sense to understand that. ठीक है? मतलब आई वाज आस्किंग मुझे ये सती वाला जो पास टाइम है डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें इसमें समझने में थोड़ा मुश्किल आ रहा था। पहला तो कि यही उन्होंने बॉडी तो जला लिया था अपना, सो इट वाज कम्प्लीटली बर्नट, और जस्ट जो बचा हुआ बॉडी था उसको लेके डांस किया। एंड वो जो डांस वाला मतलब डांस या जो कैरी करके बॉडी को वो ले जाते हैं, वो वाला पास टाइम एक्चुअली आई हैव रेड दिस इन भागवतम, बट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर कि ये जो विष्णु जी उनका शरीर काटते हैं, ये भागवतम में आई थिंक आई हैव नॉट रेड, बट ये किसी दूसरे पुराण में है। नॉट श्योर इफ इट इज देयर इन द भागवतम। So what is your point, Prabhu? Why are you asking these questions which I don't see any point behind these questions? Why are you, I mean, are you trying to be a scholar or what? What is the नहीं point मुझे of this question? I can't get the point of this question. कहीं पे भी लिखा होगा, कहीं तो लिखा है. So what is your problem? If it is not जस्ट in ट्राइंग टू Bhagavatam, it may अंडरस्टैंड। have been in some other Purana. What are you going to do some research paper on this? नहीं मुझे जस्ट पास टाइम को समझने का प्रयास कर रहा था, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द होल पास टाइम, सो देयर What is it that you want to understand? What are you missing? What are you trying to understand here? मतलब दैट वीरभद्र जी को प्रोड्यूस किया एंड देन मतलब सती जी को लेके डांस किए, या व्हाट हाउ इट हैपेंड एग्जैक्टली। What is the problem? I don't see any problem here. What is your problem? Where Bhadra has killed Daksha and Lord Shiva took the body of Sati. And what is the contradiction between these 2 points? Is there a contradiction? Not a contradiction, Bhaji. I was just asking that there is मतलब in which sequence how the flow went, मतलब वीरभद्र जी को Why is भेजने के that बाद important? Why is that important? Is that important? Don't waste your time asking this kind of silly questions. Where better you delve into the essence. What is the essence? Just focus on that. पहले ये डांस किए कि पहले ये काटे फिर उसके बाद फिर कब क्या हुआ है, whatever. Why are you so bothered about these unnecessary trivialities? कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, जो भी हुआ है. How does it matter to you? What difference does it make? nothing, Bhaji, sorry. Unnecessary, मतलब question should be qualitative. Questions should have some, try to ask questions which are, what do you say, meaningful, which are purposeful, which have some import, like that. ऐसे हुआ, दूसरे पुराण में लिखा होगा उन्होंने जो कट किया, तो क्या हुआ, दूसरे पुराण में लिखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम? And then well, which happened after which? I'm not so much worried about those things. Whatever happened first, whichever happened, because that's why Bhagavatam doesn't give importance to chronology so much. कौन सा पहले हुआ? Bhagavatam is not a chronological historical record. Chronological नहीं, chronological जो होता है वो इतिहास होता है, पुराण chronological नहीं होते हैं.
because they are only concerned about the lesson on that pastime, not the chronology. Okay? जी गुरुजी Rather ask questions which are related to the essence of the teaching and how to apply that essence. That's where the focus should be, not this kind of trivialities. ठीक है? जी गुरुजी Okay. Thank you very much, Prabhupada. अरे तो लेट हो गया क्लास के बाद पूछना। आपसे हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय।